And today I'm going to show you in practically how we can select a text using a mouse and selecting the text using a keyboard, okay, and deleting the text. So just watch this video carefully and try to understand your topic. Okay, firstly I can use the mouse. As you can see, the moving cursor, this is called blinking. As you can see that it can blink. ये देख रहे हो आप, ये ब्लिंकिंग लाइन है. ओके, कर्सर जिसको बोला जाता है. हियर आई कैन मूव द कर्सर वेयर आई वांट. ओके, so firstly I will select the text which I want to selecting by using the mouse. So you can just put the cursor means arrow. You can see that the arrow things, this is called cursor. Firstly you can put the cursor on the word which you want to select, then you can click here and लेफ्ट क्लिक ऑन द माउस बटन. लेफ्ट मीन्स फर्स्ट वाला जो होता है उसको हम लोग क्लिक करेंगे. इसमें देखो लेफ्ट है एंड राइट है, तो हम लोग लेफ्ट को क्लिक करेंगे. फर्स्टली वी विल क्लिक द लेफ्ट बटन, देन यू कैन सिलेक्ट द होल डाटा. एज यू कैन सी द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड. ओके, और यू कैन सिलेक्ट वेयर यू वांट. उतना सिलेक्ट कर लो जितना आपको सिलेक्ट करना है. ओके, दिस इज द वे हाउ वी कैन सिलेक्ट अ टेक्स्ट बाय यूजिंग माउस. नाउ आई कैन शो यू हाउ वी कैन select a text by using keyboard. And here you can see that the first option to select the to the end of the current line is shift plus end. First we have to select the shift plus end button. So in the keyboard, this is called the keyboard of our computer, and this is the shift button. As you can see, firstly we will click the shift button, and here you can see that the end button is also given here. I hope you can see. Okay, so here I will click the shift button, then firstly we can move the cursor and shift button, then end button, and you can see that the last line of the para is selected. Okay, and from the beginning if we want to select the from first line, we will just click on the first line, and here you can see that the shift plus control plus home button is given here. So here we will select the shift plus control plus home. So for it, firstly you have to move the cursor in the last line, and then shift plus control plus home, and you can see that the whole paragraph or the whole document will be selected. Okay, and the last one is to select the entire document is control plus A. Here you can see that मतलब लास्ट सेकेंड टॉपिक में हम क्या बोले कि जब इसको किए, इसको आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो. जस्ट लाइक आई वांट टू जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट 4 लाइन, तो यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, यहाँ पे छोड़ दिए कर्सर. देखो यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है. एज यू कैन सी दैट द कर्सर इज ब्लिंकिंग है. shift plus control plus home, you can see that half document will selected. And if we want to select the whole document, we have to click the control plus A button, and your whole document will be